तीनों हजरात, वीकेंडर पे चर्चा के इस हफ्ते के एडिशन में मैं आपका होस्ट चिरायु भट्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी एयरलिफ्ट, गल्फ वॉर का जिक्र था उसमें कि गल्फ वॉर जब हुआ था तब किस तरह से हिंदुस्तानियों को वहां से इवैक्यूएट कराया गया था। ये हमने पर्दे पर देखा था। पिछले 4-5-6 हफ्तों में कुछ ऐसी ही घटना हुई है। यूक्रेन में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत रेस्क्यू किया है। यूक्रेन में रहकर पढ़ने वाले लगभग 20,000 भारतीय छात्रों में 16,000 से अधिक को एयर इंडिया और वायुसेना की 90 उड़ानों के जरिए बिना कोई किराया वसूले सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। 24 मंत्रियों के सहयोग से चला ऑपरेशन गंगा अपने अंतिम चरण में है और ऑपरेशन गंगा के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू न्यूजीलैंड हिज एक्सीलेंसी श्री मुक्तेश परदेशी जी। सर, आपका हार्दिक स्वागत है वीकेंडर पे चर्चा में। बहुत बहुत नमस्कार। आज एक दिन देर से ही सही, पर सबसे पहले मैं लोगों को होली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आपको भी शुभकामनाएं सर। तो बताइए ऑपरेशन गंगा के बारे में विस्तार से, तफसील से हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में मुझे आमंत्रित किया है। इसके पहले कि मैं ऑपरेशन गंगा की बात करूं, आपके दर्शकों को ये जानने की इच्छा होगी कि भारत ने इस पे क्या पॉलिटिकल स्टैंड लिया है इस कॉन्फ्लिक्ट पे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत अभी सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। हमने जो डिबेट हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल में और जनरल असेंबली में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है और जो भारत का पोजीशन है बहुत कंसिस्टेंट रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक ब्रीफिंग हुई थी और हमारे जो एम्बेसडर हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर टीएस त्रिमूर्ति ने एक स्टेटमेंट दिया था। उसका जिस्ट ये था और मैं अंग्रेजी में कोट करना चाहूंगा सो दैट मिस इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं हो। उन्होंने ये कहा था कि इंडिया continues to remain deeply concerned at the ongoing situation, which has progressively deteriorated since the beginning of the hostility. The conflict had resulted in death of civilians, displacement of thousands of people internally, and outflow of more than 3 million refugees to neighboring countries. The humanitarian situation had worsened, particularly in the conflict zones. There is an urgent need, therefore, to address the humanitarian needs of the affected population. In this regard, India supports the initiatives of the UN and its agencies. We reiterate our call for immediate ceasefire and immediate cessation of hostilities across Ukraine. Our Prime Minister has reiterated this on several occasions and called for immediate ceasefire and emphasized that there is no option but the path of dialogue and diplomacy. So you'll see that India has taken a principled position. We have also stressed the fact that we had to ensure the safe return of about 22,500 Indians फ्रॉम यूक्रेन। और आज का मुद्दा वही है कि भारत ने 22,500 छात्रों को यूक्रेन से कैसे इवैक्यूएट करवाए। जी बढ़िया सर। एयर इंडिया और वायुसेना के रोल के बारे में भी थोड़ा अगर तफसील से आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बता पाए, क्योंकि फील्ड पर तो वही थे, तो उनके रोल के बारे में भी थोड़ा हमें समझाइए प्लीज। पहले मैं शुरुआत करता हूं कि ऑपरेशन गंगा कैसे विजुअलाइज किया गया और कैसे हमारा जो दूतावास यूक्रेन में है वो जनवरी से ही जनवरी में सबसे पहले प्लान बनाया गया। 3 एडवाइजरी इशू किया गया। छात्रों को यह कहा गया कि देखिए सिचुएशन टेंस है और कभी भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। तो अगर आपका रहना बहुत इसेंशियल नहीं है यूक्रेन में
तो आप भारत चले जाएं। और 23 फरवरी तक, आपको पता है कि 24 फरवरी से हॉस्टिलिटीज का आउटब्रेक हुआ, 23 फरवरी तक 4000 स्टूडेंट ऑलरेडी वापस आ चुके थे। और उन्होंने जैसे भी हुआ कमर्शियल बेसिस पे टिकट लेके, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको इनकरेज किया था कि वो आप वापस आ जाए। जब 24 फरवरी को हॉस्टिलिटीज का आउटब्रेक हुआ, तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज, इस बीच में एम्बेसी ने ऑलरेडी एक्सरसाइज किया हुआ था, उसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन ड्राइव। सबसे पहले ये एस्टिमेट करना होता है कितने लोग फंसे हैं और कहाँ पे हैं, so that we can make logistical arrangements। तो हमारे एम्बेसी के पास 20,000 लोगों का ऑलरेडी कॉन्टैक्ट इस रजिस्ट्रेशन ड्राइव के बाद में उनके पास था। तो 24 फरवरी से फिर गवर्नमेंट ने विजुअलाइज किया एक ऑपरेशन गंगा, जिसमें जिसकी स्ट्रैटेजी थी, देखिए तब तक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका था, यूक्रेन का एयर स्पेस बंद हो चुका था, कोई फ्लाइट नहीं जा सकती थी, चाहे सिविलियन हो या मिलिट्री एयरक्राफ्ट, तो यूक्रेन नहीं जा सकता था। तो हमने स्ट्रैटेजी ये बनाया कि 5 जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, मोल्डोवा और रोमानिया, उनके वहां पे हमारे स्टूडेंट जाएं और वहां से उनको इवैक्यूएट किया जाए। लकीली इन 5 देशों में से 4 देशों में भारत के दूतावास है, तो ये संभव हुआ। हम दूतावासों को ये कहा गया, उन्होंने टीम क्रिएट किया और चारों देशों में टीम बॉर्डरिंग एरियाज पे भेजा गया। तो हुआ कि ट्रेन से और बस से स्टूडेंट को वेस्टर्न कंट्रीज में लाया जाएगा। वहां पे हमारे दूतावास, पोलैंड, हंगरी या रोमानिया के दूतावास के जो लोग थे ऑलरेडी थे, वो बॉर्डर एजेंसी के साथ लिएजन करके उनको उस देश में ले जाएंगे। और वहां फिर हमारा एयर इंडिया और भी बहुत सारे प्राइवेट एयरलाइंस, और मेरे पास लिस्ट है जिसमें तकरीबन भारत के सारे प्राइवेट एयरलाइंस उसमें इन्वॉल्व थे, इंडिगो, विस्तारा, ओ, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अपार्ट फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। So out of 90 flights, 14 flights were operated by the Air Force, and the rest 76 were operated by commercial airlines. We have been able to evacuate more than 22,500 people, and roughly 200 people from 18 other countries were also evacuated free of cost. That's our philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. Large number of students were from Bangladesh and Nepal, and they were given lift to take the facility of evacuation and come over to Delhi or Mumbai, and from there to proceed. तो इस तरह से वे हुआ। इसमें भारत होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अडॉप्ट किया गया, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो बाहर है, लेकिन सिविल एविएशन, एयर फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उनके सहयोग के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो पूरे भारत सरकार इसमें इन्वॉल्व था। जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, उसमें भी 4-5 लेयर्स थे। सबसे टॉप में था जो खुद प्रधानमंत्री लीड कर रहे थे, उन्होंने जिम्मा उठाया कि वो रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति से पर्सनली बात करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, पोलैंड हो, हंगरी हो, रोमानिया हो, सबसे उन्होंने बात की। तो एक हुआ प्रधानमंत्री का हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट के साथ एंगेजमेंट, एंड दैट हेल्प्ड in creating a credible ceasefire for a few hours, which made possible evacuation of our stranded students in Sumy. Sumy was already in the conflict zone, and this was the most challenging episode of the evacuation process. तो एक हुआ प्रधानमंत्री ने एंगेज किया लोगों के साथ, दूसरा हुआ हमारे विदेश मंत्री ने अपने लेवल पे सारे विदेश मंत्रियों से बात की, जो रशिया और यूक्रेन के अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें के जरिए हमारे स्टूडेंट आने थे, वहां से बात की।
हमारे फॉरेन सेक्रेटरी दिल्ली में लगातार रूस और यूक्रेन के राजदूतों से कांटेक्ट में थे दिल्ली में। फिर इसके अलावा 2 हमारे राजदूत जो यूक्रेन में थे और मॉस्को में थे, वो वहां की एजेंसीज और फॉरेन मिनिस्ट्री से टच में थे। इसके अलावा 4 मंत्रियों को पोलैंड, हंगरी, रोमानिया भेजा गया, 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स को, कि वो जाएं और वहां लोकल अथॉरिटीज के साथ इंगेज करें। उसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है व्हेन योर कैबिनेट मिनिस्टर ट्रैवल्स टू अदर कंट्रीज, इट मींस यू आर सीकिंग नॉट ओनली देयर गुडविल, it shows the importance which government of India attached to the evacuation and safety of its people. So आप देखेंगे किस तरीके से चल रहा है। इस बीच में यूक्रेन में और दिल्ली में एक सिचुएशन रूम इस्टेब्लिश किया गया 24/7, जिसमें 100 लोग काम कर रहे थे, 100 लोग हमारे ऑफिशियल्स। वेरी नाइस। विदेश मंत्री ने हमारे 4 दूतावासों को एडिशनल स्टाफ भेजा, रशियन स्पीकिंग, जो कि यूक्रेन और उस बॉर्डर पे हेल्प कर सके, और जो उन कंट्रीज को जानते थे। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, हमारे मित्र हैं जो हंगरी में राजदूत थे, लेकिन 2 महीना पहले वो दिल्ली में आ गए थे और अभी आईसीसीआर के डायरेक्टर जनरल। नए राजदूत नहीं पहुंचे थे, इनको दिल्ली से टेम्पररी ड्यूटी पे भेजा गया। आप जाएं हंगरी में, आप जानते हैं वहां लोगों को, तो उनको वो अभी भी स्टेशन है वहां पे, जब तक पूरा ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता। तो ये तरीका था जिसके हिसाब से ऑपरेशन गंगा सुचारू रूप से चल सका। वेरी वेल एक्सप्लेन सर। सर, एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा होती है कि विद इन द बॉर्डर ऑफ अ नेशन जो सिटीजन्स रह रहे हैं, उनकी सलामती, उनकी सिक्योरिटी, उनकी फलाह महबूद की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है उसका विस्तार हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कहीं भी भारतवासी अगर सफर कर रहा है, भारतवासी अगर दुखी हो रहा है, हमारे नागरिक कहीं कोई मुसीबत में फंसे हैं, तो सरकार उनका रेस्क्यू करती है। उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, मैं तो भारत का पासपोर्ट का हेड था, चीफ पासपोर्ट ऑफिसर था। आप अगर पासपोर्ट देखेंगे जी, तो पासपोर्ट में प्रेसिडेंट के नाम से एक एश्योरेंस दिया गया है जी, और उसमें 2 चीज है। पासपोर्ट entitles you to 2 rights. One is right to return to your country. It says कि आप कभी भी देश में वापस आ सकते हैं। जो कोविड-19 में कई देशों ने उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाला, लेकिन सिटीजन्स का इनएलिएनेबल राइट है टू रिटर्न टू कंट्री, ठीक है, एंड दैट पासपोर्ट्स आल्सो। एंड द सेकंड आल्सो इज दैट द गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट यू। It asks for safe passage of your citizen abroad. उसका मतलब ये हुआ कि आपके नागरिक कहीं भी हों, उनका सेफ पैसेज और प्रोटेक्शन सरकार की जिम्मेवारी है जी। और आप देखेंगे कि पिछले 20 सालों में भारत सरकार और हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है। पहले भी करते थे, बट अभी जो हुआ है एक प्रोएक्टिव नेसेस में आ गया है। सबसे हम धन और व्यक्ति की चिंता नहीं करते, हम हमारा पूरा जो तंत्र है, जो सिटीजन फंसे हुए हैं, उसको बचाने में और उसको वापस लाने में लग जाता है। आप देखेंगे कि इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे, हमारे हजारों लोग लग गए थे 20,000 लोगों को निकालने में। तो एक सुप्रीम कमिटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दैट वेयरएवर यू आर, वी विल प्रोटेक्ट यू, विल ब्रिंग यू होम एंड वी केयर फॉर यू. So that's the broad philosophy of the government of India, and that's our sovereign kind of commitment given to our people abroad. Whether it happens through the Vande Bharat flights during COVID-19 crisis, or in present case in Ukraine. Earlier we
evacuated people from Libya, Iraq, and many other Yemen. यमन, Yes, for instance. यस। तो सर मैं अगला सवाल मेरा यही था कि पिछली जो इवैक्यूएशन की ऑपरेशंस रही है, चाहे वो यमन में हो, अफगानिस्तान में, लीबिया, इराक या गल्फ वॉर के वक्त जो कुवैत में सरकार ने काम किया था, उन ऑपरेशन से ये ऑपरेशन गंगा किस तरह से मुख्तलिफ था, डिफरेंट था? मैं पर्सनल लेवल पे 2010 से किसी न किसी शेप में इस तरह की इवैक्यूएशन से जुड़ा हुआ रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पासपोर्ट का हेड था तो चीफ पासपोर्ट ऑफिसर कहीं न कहीं कमिटीज में मैंने पार्टिसिपेट किया है। और 2011 में जब अरब स्प्रिंग के कारण लोग लीबिया से या इजिप्ट से छोड़ के वापस आना चाहते थे, तो उस समय भी मैंने करीब से देखा है। फिर बाद में यमन में मैंने देखा। एक अंतर जरूर है, क्योंकि इस बार एक्टिव hostilities. So we evacuated people against the backdrop of ongoing hostility. In some other cases, bombarding or shelling was not going on. So this time, because of war-torn situation, the challenges were multiple and of a much higher and I would say serious nature. सही बात है सर। सर, प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने जो दृढ़ता दिखाई है, उसके बारे में अगर आप कुछ कहें तो। एक तो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है भी, दूसरा प्राइम मिनिस्टर का एक पर्सनल कमिटमेंट। जब भी हम लोग एम्बेसडर्स कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं तो प्रधानमंत्री ने कई बार कहा कि देखिए, आप लोग फॉरेन पॉलिसी के अलावा पीपुल्स को, लोगों को आप सेवा भाव से ट्रीट करें। तो ये जो सेवा भाव है, ये प्रधानमंत्री से इमिनेट करता है, उनका पर्सनल कमिटमेंट, उनका गवर्नमेंट का कमिटमेंट, और उसी कमिटमेंट को सारे एम्बेसडर्स, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी या सारे जो टीम है वो उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। दिस फ्लोज फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, एंड वी हैव बीन ट्रेन्ड लाइक दैट, particularly during the last few years, that people matter and we are here to serve our people abroad. राइट। सर, एक सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है BAPS, उसने भी अच्छा एक एक्टिव रोल यहाँ पर निभाया है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि ये बहुत बड़े स्केल पे हुआ। हाँ। इसमें गवर्नमेंट के अलावा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, voluntary actions groups, they were all involved. And how for example, their help was required when people crossed over to, say, for example, Poland or Hungary or Romania. I mean, they needed food, they needed medical attention, they needed shelter. In all this, we were helped by organizations like BAPS. I know that several Indian business houses located in these countries, they also came out and helped in providing shelter, medical attention, and food to people when they were crossing over to these countries to take onward flights. So this had been possible with the support of people from socio-religious organizations, from voluntary groups, from non-governmental organizations, as well as from the business community. Very nice. सर, इवैक्यूएशन का एक जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से काम करता है, वो अगर आप थोड़ा हमें समझा पाएं तो। इसको पिछले कुछ सालों में I would say we have refined it, and this goes into auto boat. We have in Ministry of External Affairs, now we have a division dealing with rapid action, where these kind of situations keep on emerging.
So Mhm. in the beginning, there used to be ad hoc approach, but during last 10, 15 years, we have there's a Government of India committee. There is a mechanism within the Ministry of Foreign Affairs, and all embassies. We also have a crisis management plan. So the first thing, whenever a crisis like this emerges, you like to estimate, Mhm. and you like to have a 24 by 7 control room. So in Ministry of External Affairs in Delhi, a situation room manned on 24 by 7 basis was operated, so that anybody who wanted any help in Ukraine, or they wanted to share any information, they could contact this control room. I personally know I received at least 2 calls from the family members from Bihar. They approached me. They Mhm. said that, my in one case my bhanja is stuck, and other case the son is stuck, and they are not able to contact. So how do we? I said, well, please send email or text on this control room, inform about your wards, so that embassy knows about them, and they should remain in touch with the embassy through either Facebook page or WhatsApp or the control room. So the first action is to remain in touch with people who are stranded. So we Mhm. created 24 by 7 control room in Ukraine when embassy was functioning, and in Delhi definitely, because in Ukraine situation was not very stable, and things were happening. We were not sure until what time we will be able to maintain our embassy. But Delhi definitely 24 by 7. So people started getting in touch with this the situation. We received, I think our foreign minister, while speaking to the parliament, he gave that thousands of calls and thousands of emails were received, locations were ascertained, and at least a sense of assurance was conveyed to them. Right. So this is and then we thought how to strategy was developed. Strategy sitting in Delhi in situation room at the highest level, that there is no way that flights can go to Ukraine. What do we do? In this case, the Navy was not taken on board because it had to be through flights. So a scenario was developed under which our flights will go to 4 neighboring countries, taking advantage of our embassies which are already there. We needed manpower because all these embassies, they could not send everybody to the border, so they were supplemented with manpower from other neighboring embassies on a very short notice. Within, I believe, in 6 hours or 12 hours, many ambassadors in Western countries, they would have relieved some officials, say for example from Germany, that hey, you go to Poland on the border and help ambassador there to create a team. So we supplemented the number of staff in all these countries, so that teams could be created and they could be deployed at the bordering area. The first thing was, when they were crossing over to the countries, they needed liaison, because and they were in bad shape. So then the help of the community organizations were taken. When embassy will help them in crossing over, at the same time community organizations will be ready with some food packets, some shelter, some medical attention, because sometimes people walked also they had to um, you know take multiple routes and different forms of transport. So by the time they were in other countries, they were completely in with a sense of low morale and a sense of fatigue. They were tired and they needed all the attention. So this was how it was done. नाइस सर। सर देखिए, मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया है इधर उधर से, थोड़ा सोर्सेज से, कि ओवरऑल तो ऑपरेशन गंगा के बारे में बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आए हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है, 5% 10% लोग ऐसे भी हैं जो जिनको शिकायत भी रही है कि भाई फ्लाइट कंफर्टेबल नहीं थी, या कुछ उनकी कुछ शिकायत भी है, तो उस पर अगर आप कुछ रोशनी डाल पाए तो।
देखिए जो एयर फोर्स फ्लाइट से जो होती है, दे आर नॉट पैसेंजर फ्लाइट्स. जी. In 2014, no, sorry, in 2015, there was an earthquake in Nepal. Those days, I was posted in Delhi, and I was asked to go to Nepal to take to head relief operations in Pokhara. I traveled in Air Force flight. Do you know? I there were only 3-4 passengers in that flight with a stack of water and medicines and in biscuit. In such scenario, comfort takes secondary place. Uh, I saw on social media a post made by one student saying that vegan food facility was not available. When we are dealing with conflicts, when we are in a war situation, this small comforts we have to make adjustment to. Definitely. Apart from one stray comments made by and I would say some of these comments were a little immature. When you look at the gravity of the situation, look at the complexity of the situation, very fact that the government of India was able to evacuate 22,500 people safely, that's a commendable, that's a milestone in India's external relations. We had one casualty, one person who, when he was going to pick up grocery, he was hit. And there was another person who sustained injuries, who crossed over to Poland, and our embassy organized a doctor to fly with him up to India. So one injury and one casualty. Just imagine how, but 22,500 people were safely evacuated. So here, the bottom line is the government, no other country was faced with a situation like this. Very well explained. And international community recognizes that in spite of the ongoing conflict, the government of India has been able to do it. That speaks of our goodwill with countries, both Russia and Ukraine, and all friendly countries like Poland, Moldova, Romania, Hungary. So that's, it has happened due to very sustained diplomatic efforts launched by government of India under the leadership of Prime Minister and the Operation Ganga. Right. सर, कुछ जगह पर यह भी पढ़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर करवाया था 6-7 घंटों के लिए. क्या ये सच है या एग्जेजरेशन है? नहीं, ये सच है. या देखिए, जो सुमी में लोग फंसे थे और ये लास्ट बैच था, ये सबसे डिफिकल्ट पोजीशन में थे. एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो 24,000 लोग स्टूडेंट फंसे हुए थे, से ज्यादा होंगे, वो तकरीबन भारत के हर प्रदेशों से आते हैं जी. 35 स्टेट से आते हैं. 35 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी का कोई ना कोई स्टूडेंट था. बट कुछ ऐसे स्टेट थे जिसके तकरीबन 1,000 से ज्यादा से थे, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, हर स्टेट से तकरीबन 1,000 से ज्यादा स्टूडेंट. और एक कोई एक जगह पे नहीं थे, पूरे यूक्रेन में कभी कभी कुछ लोग 1,000 इंटरनल डिस्टेंस क्रॉस करके हमारा ऑपरेशन गंगा को अवेल कर पाए हैं. इसमें सबसे डिफिकल्ट रहा सुमी, जहां पे बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, जब तक क्रेडिबल सीज फायर नहीं होता. एक है कि सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया, ठीक है. क्रेडिबल सीज फायर से मतलब है कि वो ग्राउंड पे होल्ड भी करना चाहिए. कह दिया और हमारे स्टूडेंट निकल गए और फिर शेलिंग शुरू हो गया, तो उसमें कैजुअलिटी हो जाएगी. सो वी हैड टू इंश्योर विद द हेल्प ऑफ बोथ द गवर्नमेंट्स ऑफ Russia and Ukraine that their commitment is implemented on the ground for certain hours. So if there was a commitment for 6 or 8 hours,
and then Indian agencies, this was a very limited window under which we had to operate and evacuate our people. So yes, there was a ceasefire for a limited duration agreed by both the governments. It was because this was in response to humanitarian appeal made by the government of India, led by Prime Minister Modi. He had spoken to both these presidents and personally appealed for safety and security of these people. वेरी वेल एक्सप्लेन सर. सर जाते जाते हमारे सोशल मीडिया पर एक दो क्वेरी आई थी, वो भी मैं थोड़ा आपसे पूछना चाहता था कि वो एक कोई ये पूछ रहा था कि कश्मीर फाइल जो फिल्म है वो इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एंडोर्स किया है, इतना अच्छा रिसेप्शन उसे मिल रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड में अभी तक रिलीज नहीं हो पाई है. तो हिज एक्सेलेंसी अगर उस पर कुछ रोशनी डाल पाए. देखिए, एक फिल्म है और ये फिल्म जहां तक जैसे मैंने रिव्यू पढ़ा है, फिल्म claims to be based on real events which happened in 90s. So, this speaks about uncomfortable truth, but the truth is being told after say 30 years. In government of India also we have a classification system. So, for example, the many things which I might be conveying to my government at this point of time about India-New Zealand relationship, they are classified. They will be declassified after 30 years. Why 30-year period is kept? So that there is no embarrassment if some inconvenient messages. Immediate embarrassment से बचा जाए. हाँ. अगर उस समय 90s में ये प्रॉब्लम होता रहता और उसी समय ये फिल्म बनती, तो लोग कह सकते थे कि भाई इसका लॉ एंड ऑर्डर पे इम्पैक्ट हो सकता है. यह फिल्म बन रही है 30 साल के बाद और ये हुआ है, एक तबका है who were victims of what happened. So if there is a genuine effort made to document and share with our people that episode of our history, which may be inconvenient, there's a freedom of expression. There are films made, and if history is being narrated with a sense of genuineness and sincerity, then it should be supported. I think when you say that government of India has endorsed, well, there's nothing like it has been cleared by the censor board. They have looked at the certification process. Then nobody is saying that it's not historically correct. The episode has happened. Now, so with a sense of freedom of expression, if the film has been liked, and I believe it has become one of the popular films in recent times, why it should be shown in New Zealand and in all other countries. If it meets the standards of certification and censor, if it's not creating any law and order situation, if it's not creating any sense of disharmony in India, why should it create disharmony in New Zealand or Australia or for that matter any other country? I believe New Zealand supports freedom of expression, so we should not be working to muzzle the voices of people. We should, as genuine, with a sense of genuine desire to understand that particular episode in our history, we should go and see the film. That should not impact on harmonious relationship which so happily exists between the communities here in New Zealand. Thank you so much, sir, for your precious time. तो देवी और सज्जनों, ये थे आदरणीय मुक्तेश परदेशी जी, जिन्होंने ऑपरेशन गंगा के बारे में स्पेसिफिकली हमारे साथ तफसील से बात की, और जाते जाते हमने उनको कश्मीर फाइल के बारे में भी पूछा. सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.